Hello friends, good morning. Yesterday we talked about national power and collective security. Hi, Lalita, good morning. Morning sir, morning. Sorry sir, ये link पता नहीं आज it took so much time to open. पता नहीं क्या हुआ. I think नेट की वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ 2-3 बार किया. ये बहुत टाइम, अभी भी बहुत टाइम में खुला. No problem. चलो खुल गया ना. अच्छी बात है. Yes sir. अच्छा, चलिए आज हम लोग कलेक्टिव डेटरेंस पढ़ेंगे, राइट? Yes sir. डेटरेंस क्या होता है पता है? डेटरेंस का मतलब होता है जब हम घर में रहते हैं, 4-5 भाई बहन हैं या 2-3 भाई बहन हैं, तो पता है हम एक बहनों से लड़ झगड़ जाते हैं, दूसरे से नहीं लड़ते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम उसके साथ लड़ेंगे तो वो बहुत ही जोर से रिटालिएट करेगी. होता है ना? या गली मोहल्ले में पता नहीं, अरे फलाने वाले अंकल से मत भिड़ना भाई. हाँ, होता है ना? या फलाने लोगों से बात मत करना. क्यों? हाँ, झगड़ना मत, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आप उससे झगड़ेंगे तो वो रिटालिएट करेगा, अच्छे से रिटालिएट करेगा, राइट? इसका मतलब है कि इस बंदे ने या आपके उस बहन ने एक डेटरेंस डेवलप किया है. क्या डेवलप किया है? डेटरेंस डेवलप किया. डेटरेंस डेवलप किया है, यानी कि अ थ्रेट ऑफ रिटालिएशन. अगर आप अगर कोई हार्म करता है तो शी कैन रिटालिएट, राइट? Yes sir. Right? So लिखिए, deterrence means it is one of the old military strategy. लिखना शुरू कर दीजिए. It is a old military strategy. एक सेकंड सर. It is one of the old military strategy, deterrence. आज तो आवाज से बहुत कम आ रही है. आवाज कम आ रही है, बट मैं तो पहले ही जैसे बोल रहा हूँ. Yes. It is one of the old military strategy. Full stop. Yes sir. To deter means Yes. produce an effect Yes sir. so that your enemy Yes sir. must not dare to attack on you. एक बार बीओपी की क्वेश्चन लिख लें सर, वरना तो भूल जाएंगे. बीओपी के लिए लिखिए. मेरे हिसाब से रियलिज्म पढ़ लेते तो कर लेते, अदरवाइज बीओपी के लिख लीजिए, अच्छा रहेगा हमारे लिए. क्या चीज हम सर? करते जाए. नहीं, अच्छा रहेगा, हम करते जाएंगे ना, राइट? समझ नहीं आया सर मुझे, मतलब मैंने बोला कि नहीं, रियलिज्म पढ़ लेते, उसमें भी बीओपी है, बट अच्छा है पढ़ लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं. लिखिए. नहीं सर, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना, मुझसे स्किप हो जाएगा बाद में दिमाग से. नहीं, और
अगर 5 क्वेश्चन में दे 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दे देता हूँ ना, तो होता रहेगा कि धीरे धीरे होता रहेगा, नहीं तो वो इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट। लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए डिस्कस द आइडिया ऑफ BOP, balance of power. Discuss the idea of balanced power and explain the golden age of BOP. थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, evaluate BOP during Cold War. इसमें थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा सा इश्यू हो, बट जब कोल्ड वॉर करेंगे यू विल बी इजीली टू डू इट, राइट। क्योंकि कोल्ड वॉर के बारे में आपको ज्यादा इश्यू नहीं है, बट क्वेश्चन बनता है तो मैं दे दिया। लिखिए थर्ड क्वेश्चन, explain the China strategy, or explain the China's view of international politics. ये 150 वर्ड में लिखिएगा। Again same question होगा, explain the US perspective on international politics. With reference to BOP. फिर क्वेश्चन लिखिए, how US is planning to counter peaceful rise of China. How? ये 200 word. How the US is planning to counter peaceful rise of China. 150 वर्ड्स अमूमन ये एक पेज आगे पीछे, ऐसा ना? ज्यादा नहीं होगा, Explain the US perspective on international politics with reference to BOP. How the US is planning to counter peaceful rise of China. Done. Done? Okay. Critically evaluate BOP. क्रिटिकली इवैल्यूएट बीओपी, यानी इसमें बीओपी लिखना है, उसका क्रिटिसिज्म करना है, राइट? ओके। फिर लिखिए, कैन इंडिया
afford NAM? Can India afford NAM in the contemporary time? Can India afford NAM in the contemporary time? Clear? Yeah. What is Thucydides trap? What is Thucydides trap? How the US and China, how the US and China are destined to meet, destined to meet a what in 21st century? What is Thucydides trap? How the US and China are destined to meet a war in 21st century? या सिंपल ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है कि इज वार इनएविटेबल बिटवीन यूएस एंड चाइना? आंसर सेम होगा. Okay. Is war inevitable between the US and China? Is war inevitable between the US and China? Right? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन की, what is hegemon power? What is hegemon power? Is it possible? Is it possible for China to displace the US in the existing world order? Is it possible for China to displace the US in existing world order? लिख लिया? Yes, sir. Our question is the US hegemony. Is the US hegemony on decline? Is the US hegemony on decline? Yes, sir. फिर क्वेश्चन लिखिए. How the formation of Quad
Quad is engineering a new equation of BOP. How the formation of quad is engineering a new equation of balance of power. How the formation of quad is engineering a new equation of BOP. Yes, sir. Done? Yes. Right. लिखिए. Question again. Yes, sir. How India should do BOP to counter China's challenge. How India should do BOP to counter China's challenge. Yeah. Right? Yes, sir. और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए. What are the relevance of BOP, balance of power, right, in 21st century? What are the relevance of BOP in 21st century? सबको 200 वर्ड में लिखना है. 200 वर्ड से 250 वर्ड की बात, राइट? Yes, sir. हाँ, मात्र एक को लिखना है 150 वर्ड में. राइट. कितने क्वेश्चन हुए? Yes, sir. कितने क्वेश्चन हो गए? 13. 13. Yes, sir. ओ, ज्यादा हो गया. अब तो ठीक है, मतलब. हाँ, राइट. एक और दे दूं इंडिया चाइना के बारे में. Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए. Discuss the current conflict between India and China. Discuss the current conflict between India and China. इसको हम थोड़ा बाद में भी करेंगे जब इंडिया चाइना रिलेशनशिप करेंगे, करंट जो भी है. बट थोड़ा यहाँ पर भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, करंट कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली border लिखिए. राइट with reference to border disputes. Right with reference to border disputes. ठीक है, border disputes के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है. फाइन. Yes, sir. हाँ. सो 14. Yes, sir. ओके. चलिए, अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी दे दूं या रहने दूं?
कलेक्टिव सिक्योरिटी दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, लिखिए। छोटा है ये तो लिख लेते हैं सर, अभी बता दीजिए। हाँ 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 हाँ, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। What is the basic concept of collective security? What is the basic concept of collective security? Yes, sir. Right? Discuss the changing nature of the concept collective security. इसमें एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसान हो। Write with reference to post-Cold War. Post-Cold War. Right? Cold War से पहले क्या था, Cold War के बाद क्या था? Okay? Yes, sir. Okay. Question लिखिए। What is R2P? ऐसे ही बोलेगा, लिखेगा नहीं, सिंपल ऐसे लिखेगा। What is R2P? What is responsibility to protect? Yeah. What are the regions and what were the region behind the development of R2P? What were the regions behind the development of R2P? Done? Yes, sir. Okay. Question. Discuss the concept of human security. Do you think COVID-19 pandemic is covered by the concept of human security? Human security? Do you think COVID-19 pandemic is covered by the concept human security? Done? Yeah. अच्छा, और देखता हूँ मैं अगर क्वेश्चन बन पाता है। क्वेश्चन तो बनाने के लिए ये टॉपिक छोटा है ना। हाँ हाँ, हो गया, रहने दीजिए, इतना ही काफी है। राइट? हाँ, चलिए अब देखते हैं डेटरेंस का क्या है। डेटरेंस आप लिखिए। डेटरेंस लिखिए। Deter means produce an effect so that your enemy must not dare to attack on you. You have certain effect. आपको पता है 5 बच्चे रहते हैं और आपस में, और बच्चों को पता होता है किससे पंगा लेना है ना? Yes. तो वो पंगा किसे बोल रहा है, उससे मारना, तो वो उसको नहीं मारेगा। पता है कि उसको मारेगा ना तो उसको 2 लपड़ा उसको सीधा खींच उल्टा दे देगा। हाँ? तो वो जो बच्चे का इफेक्ट है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखा है कि वो
झगड़ता नहीं उससे, वही डेटरेंस है। समझ गए? यस सर। हाँ हाँ, देखिए देखिए, it is based on the premise, it is based on the premise यस सर। based on the premise यस। that that यस सर। if someone attack, यस। retaliation would be great enough. Retaliation would be great enough. Basically it is a, it basically full stop दे दीजिए, फिर लिखिए, basically it is a threat of retaliation if attacked. Basically it is a threat of retaliation, comma, if attacked. यस सर। Right? Right. So next point, it is mostly associated with nuclear weapon. It is mostly associated with nuclear weapon. यस सर। Nuclear deterrence, as also termed as mutually assured destruction. Mutually assured destruction. यस सर। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री है, यस सर। राइट? अब मान लीजिए कि इंडिया को पता है, मान लीजिए इंडिया ने क्या किया 1998 में, पोखरण 2 न्यूक्लियर वेपन का एक्सप्लोजन किया, राइट? एक्सपेरिमेंट किया। रिटालिएशन में क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान ने रिटालिएशन में क्या किया, इन्होंने भी एक्सप्लोजन किया, राइट? यस सर। अब क्या है कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये दो न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट है, पाकिस्तान और इंडिया, राइट? यस सर। अब इंडिया को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो कहाँ स्टोर्ड है। मान लीजिए इसका पोजीशन है कोई ए और इस पोजीशन पे है, राइट? और इंडिया अगर अटैक करता है ए को और पूरा न्यूक्लियर बम खत्म कर देता है, पाकिस्तान भी खत्म होगा और पाकिस्तान को मौका ही नहीं मिलेगा रिटालिएट करने का। ये कंडीशन है, बट इंफॉर्मेशन इतना नहीं होता है कि इसका जो लोकेशन है वो है कहाँ, राइट? तो एजम्पशन ये होता है कि अच्छा इसके पास न्यूक्लियर बम है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को मान लीजिए अटैक किया न्यूक्लियर बम से, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को ये भी पता है कि इसका सारा चीज नहीं खत्म होगा, ये तुरंत फिर से रिटालिएट करेगा और हमें ये भी ऐसा कुछ करेगा, हमें भी एक दूसरे पे करेंगे और म्यूचुअली इट इज डिस्ट्रक्टिव, राइट? सो ऐसे इसलिए बोलते हैं इट इज अ मैड, पागलपंती है ये, राइट? इट इज अ mutually assured destruction, राइट? यस सर। अब क्या है, देखिए यहाँ पर पॉलिसी है,
न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है आपको पता है? कि सिर्फ टेस्ट के लिए फर्स्ट यूज इंडिया की नो फर्स्ट यूज, यस यस यस, नो नो फर्स्ट फर्स्ट यूज यूज, टेस्ट, या नो फर्स्ट यूज। लेकिन पाकिस्तान का ये नहीं है। पाकिस्तान बोलता है, आप देखेंगे बार बार जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातें होती है तो एक बार न्यूक्लियर बम का वो फटाका फोड़ देता है कि कुछ हुआ तो हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये जो कहना है कि डेटरेंस है बेसिकली, कि भैया आप हमको टच करेंगे हम आपको खत्म कर देंगे, हम तो खत्म होएंगे भाई साहब, हमारा क्या है? हा? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना? हाँ? यस सर, सुना है ना ये चीज? यस सर। हाँ, तो ये वाली बात है। लेकिन इंडिया का क्या है? नो फर्स्ट यूज, मतलब इंडिया ने डेटरेंस डेवलप नहीं किया है। यस, कि अगर पाकिस्तान मान लीजिए छोटा मोटा अटैक करता है, छोटा मोटा काम करता है, तो इंडिया, पाकिस्तान को पता है कि ये एटॉमिक बम नहीं मारेगा, कुछ भी करेगा एटॉमिक बम नहीं मारेगा, राइट? यस। तो इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया ने डेटरेंस डेवलप नहीं किया है, बट पाकिस्तान का डेटरेंस डेवलप्ड है ऑलरेडी। इंडिया को पता है कि कुछ भी होगा तो इसमें पगला लोग है, राइट? सेना में भी पगला लोग बैठा है, और यहाँ का जो नॉन स्टेट एक्टर है पाकिस्तान में, यस, मसूद अजहर और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं बहुत सारे, है ना, दाऊद, अलकायदा, बहुत सारे हाँ, तो ये लोग क्या करेंगे, ये भी बम इनको हाथ में दे देंगे और हमारे ऊपर ही मार देंगे ये तो इंडिया को पता है कि हमें भाई साहब रेस्ट्रिक्ट होके रहना है, तो इसीलिए एक डेटरेंस। बट 2016 के बाद से गुड पॉलिसी की जो एक प्रिमिटिव अटैक है, क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव अटैक, प्रिमिटिव अटैक। मान लीजिए इलेक्शन होता है, आपने देखा है इलेक्शन होते हुए, इलेक्शन से पहले जितने भी गुंडा बदमाश होता है ना, सबको पुलिस अरेस्ट कर लेता है, पता है आपको? नहीं, अगर कौन से हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पर सर वेस्ट बंगाल में तो इतना वायलेंस होता है वहाँ पे, तो मतलब लेकिन वो जो क्या होता है ना, अब वो पुलिस के नजर में आ गए होंगे, नेक्स्ट वायलेंस होता है उसमें उसको वो अरेस्ट हो जाते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि जो बदमाश है उस सर्टिफाइड है, उस दूसरा बदमाशी नहीं कर सकता, दूसरा भी तो बदमाशी कर सकता है। पुलिस क्या करती है? प्रिमिटिव मेजर्स अपनाती है। उस इलेक्शन के दिन के लिए बहुत सारे लोग को जेल में रख लेती है, बट इलेक्शन के दिन के लिए, ये इलेक्शन के बाद वायलेंस होता है बंगाल में, इलेक्शन के दिन के लिए। ये लोग इलेक्शन में, बेसिकली बिहार में बहुत होता था कि इलेक्शन के दिन बहुत लोगों को थाने में बिठा के रखा जाता था, उनको समोसा खिलाया जाता था, उनको नाश्ता खाना पीना बढ़िया दिया जाता था कि आप लोग यहीं पे रहिए। ये डर था कि ये लोग जाके इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग ना करें, राइट? तो वो प्रिमिटिव अरेस्ट होता था। इसी तरह प्रिमिटिव मेजर्स होते हैं। तो इंडिया ने कुछ प्रिमिटिव अटैक किए थे, राइट, कि पाकिस्तान ऐसा दोबारा ना करे। तो इंडिया ने कुछ डेटरेंस डेवलप किया है 2016 के बाद, कि अगर पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया तो इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। हाँ, कभी सर्जिकल अटैक करेगा, कभी कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। बॉम्बिंग नहीं करेगा, बट कुछ तो रिटेलिएट करेगा ही। हाँ, न्यूक्लियर बम तो नहीं मारेगा, लेकिन कुछ तो कुछ रिटेलिएट करेगा, जैसे अभी किया। राइट किया। वो डेटरेंस पैदा करने के लिए किया, राइट, कि एक इफेक्ट रहे कि भाई ऐसा तो है कि मंदिर का घंटा की तरह आए और बजा जाओ तुम जब मर्जी। हाँ, होता है ना, अगर आप देखेंगे कोई इंसान होता है, अगर कोई बहुत सीधा होता है, कोई कुछ नहीं कहता है, तो सब उसको ना आकर के, उधर से आया तो वो ठुनिया दिया, उधर से आया तो वो ऐसे ठुनका दिया, उधर से आया तो वो लगा दिया, होता है ना, क्योंकि वो डेटरेंस पैदा करके नहीं रखता है। और जो डेटरेंस पैदा करके रखता है
उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। होता है ना दादा, जैसे घर पे पापा। राइट। यस सर। आप देखेंगे जब आप किसी पार्टी में जाएंगे ना, और स्पेशली आप जब किसी पार्टी में जाएंगे तो बहुत लोगों के पास ना गन होता है। या मैं एक पब 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 का नाम सुना, पब 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 हाँ, पब में लोग जाते हैं। यस। कुछ लोग बड़े बॉडी बिल्डर टाइप को लेकर के आते हैं, जिसको बोलते हैं हम बाउंसर। वो बाउंसर लेके आते हैं। क्यों लेके आते पता है? वो एक डेटरेंस अपने साथ में लेके आते कि भैया मुझसे उलझोगे तो बचोगे नहीं। मेरे पास बाउंसर्स हैं। होता है ना? यस सर। So deterrence is a strategy, right, of retaliation. Right? It is a threat of retaliation कि अगर उसके आप गिरेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। Right? Yes sir. अब लिखिए deterrence strategy. Okay, there are two deterrence strategy. Defense by denial. It means no first use policy. No first use policy. डिनाइल है कि भैया हम ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम सजाने के लिए नहीं रखे हैं एटम बम या कुछ भी। हमारे ऊपर कुछ भी करोगे तो हम हाँ समझ के रखो। इट मीन्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, उसको मना करते हैं ये। हाँ, मतलब इसका मतलब है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ऐसा नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से इंडिया का है नो फर्स्ट यूज। इंडिया का क्या है? हम तो करेंगे, सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी। हाँ, हम तो यूज करेंगे भाई, हम सजाने के लिए नहीं रखे हैं एटम बम कि दिवाली आएगी तो हम पटाखे की तरह छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान जैसे एग्जाम्पल। Exactly. It means no first use policy. Yes sir. Right? देखिए दूसरा लिखिए डिफेंस बाय पनिशमेंट। इसको ये जो डिफेंस ऑफ डिनाइल है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। It is also called first strike policy. अब दूसरा लिखिए डिफेंस बाय पनिशमेंट। Yes sir. देखिए सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी। It means retaliation, a threat of assured retaliation. Assured retaliation. Done sir. Done? Okay. देखिए ये एक्चुअली डेटरेंस को न्यूक्लियर वेपन के ही टर्म में कहा जाता है। राइट? लिखिए न्यूक्लियर डेटरेंस लिख लीजिए। फिर भी मैंने लिख लिया कि न्यूक्लियर डेटरेंस पूछे तो आप क्लियर है। न्यूक्लियर डेटरेंस। Yes sir. देखिए द हेडे ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, हेडे मीन्स हाइट,
है ना। Okay. द हे डे ऑफ नरेंद्र मोदी कब था? 2019। उसके बाद डिक्लाइन होने लगा। हे डे ऑफ अशोका, हे डे ऑफ मुगल एम्पायर, अकबर के टाइम पे, राइट। हे Yes. डे Time आता है। ऑफ, यस, जिसका टाइम आता है जब चमकता है वो। देखिए, द हे ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस वाज द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। Yes, sir. देखिए, the scholar believes that, दूसरा पॉइंट है, scholar believes that Yeah. nuclear deterrence is working in South Asia. Nuclear deterrence is working in South Asia. Despite the tension between India and Pakistan. Despite the tension between India and Pakistan. Yes, sir. Right? The purpose of nuclear deterrence is to stop. The purpose of nuclear deterrence Yes, sir. the purpose of nuclear deterrence is to stop something undesirable. Stop something undesirable from happening. The purpose of nuclear deterrence is to stop something undesirable from happening. Yes, sir. Done? Yeah. Its effectiveness, okay, its effectiveness depends on the state's ability to convince the enemy about threat of retaliation. मतलब आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि मुझसे अगर झगड़ लोगे तो मैं पकड़ के कूट दूंगा, है ना। Yes. Yeah, its effective depends on the state's ability to convince the enemy about threat of retaliation. Its purpose is intended to protect the state from any physical attack. To protect the state from any physical attack.
Yes, sir. Done? Yeah. देखिए, the USA and the USSR both had achieved nuclear deterrence against each other. Yeah. Each other during Cold War. दोनों को पता था कि अगर हम कुछ करेंगे आगे से तो पीछे से छोड़ेगा नहीं, और यही कारण था कि शांति बनी रही, कभी लड़ाई नहीं हुई। कोल्ड वॉर रहा लेकिन लड़ाई नहीं हुई। चलिए, लिख लिया? यस। अब जैसे पहली बार अटैक करते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए कंट्री बी पर अटैक कर देती है, तो मतलब ये शुरू में बी ने डेटरेंस नहीं बना रखा था, अगर फिर रिटेलिएट कर देती है तो फिर ए को लगेगा कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना, वरना ये रिटेलिएट करेंगे। राइट। नेक्स्ट टाइम अगर अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़े, अगर वहां के जो लीडर्स हैं अगर बोले कि मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, समझे? एक हवा भी खड़ा करके रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि जनरली अटैक से ही डेटरेंस पैदा होता है। नो, इट्स स्टेट कैपेसिटी टू कन्विंस योर एनिमी that there will be massive retaliation if you touch me, if you go for initial attack, right? नहीं मतलब मान लीजिए हमने पहले से बातों से नहीं कर रखा कि वैसे क्रिएट करके कि तुम हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं करेगा। और फिर हम पर अटैक हो जाता है, तब तो हम फिर रिटेलिएशन से ही दिखाएंगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली हम रिटेलिएशन से ही दिखाएंगे कि हम डेटरेंस हमारे पास है कि नहीं है। जैसे हमने राफाल खरीदा, तो ये भी एक डेटरेंस का ही तरीका ना हुआ कि दिखा, देखो हमने ये खरीदा है, क्योंकि वो फाइटर जेट है ना, कल को अगर ऐसा कुछ करोगे तो हमारे पास ये है। एग्जैक्टली। तो वो भी सोचते हैं कि वो फाइटर जेट है। यही इंफॉर्मेशन देना अपने एनिमी को कन्विंस करना कि मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है कि इफ यू टच मी, आई विल डिस्ट्रॉय यू, राइट? भाई बहनों में होता नहीं कि अरे भाई उससे मैं उससे नहीं लड़ूंगा, वो मुझे बहुत मारेगी, होता है ना? यस सर। मेरी बहन मुझे बहुत मारती थी तो मैं नहीं झगड़ता था। मुझे पता था कि अगर टच करेंगे तो वो एक मारूंगा तो वो 4 मारेगी, और फिर वो बोलेगी कि मेरा 4 था वो तुम्हारे 1 से कम था। समझे? तो तुमने मुझ पे मतलब ये किया है, फोर्स, ज्यादा फोर्स यूज किया है एक ही गुस्से में, राइट? सो एक ये तरीका होता है कि पीटना भी, और ये भी बताना कि मैंने जो पीटा वो कुछ पिटाई नहीं थी, तुमने जो तोड़ा पीटा वो बहुत पिटाई थी। हाँ, चलिए, अच्छा, देखिए इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी और इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कहीं पे हम लिख लेते हैं इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो उससे पहले कैन आई कम इन 1 मिनट? या श्योर।
Yes, sir. या सो लिखिए इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन. Yes, sir. लिखिए इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, और ऐसे लिखिए इंडिया Yeah. did Pokhran 2 in 1998. India did Pokhran 2 in 1998 and declared herself as a nuclear state. India did Pokhran 2 in 1998 and declared herself as a nuclear state. The US responded. The US along with other nuclear states reacted sharply Yes. India's nuclear capability. Yeah, sure. Right? ब्रजेश मिश्रा, आपने सुना है ब्रजेश मिश्रा का नाम? उस समय थे ब्रजेश मिश्रा, the security advisor to the PM Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee had explained India's nuclear strategy or India's nuclear doctrine. Explained India's nuclear doctrine. He said that India has security threat from China, as well as from Pakistan. Yes. Who has also secretly developed nuclear weapon. Secretly मतलब कैसे हो सकता है वो? Secretly it was a nuclear program चल रहा था ना actually यहाँ पर पाकिस्तान में. नहीं मतलब टेस्ट होता है तो पता चल जाता है या नहीं? हाँ, but it was secretly, was लिखा हुआ मैंने कहीं पे लिखा. No sir, I am saying कि हाँ, yes, जब आ गया तो of course, and who has secretly developed nuclear program, बता के थोड़ी किया, secretly ही तो किया. इंडिया ने तो 1974 में ही कर दिया था. पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन.
आई एम सेइंग कि जो टेस्ट करते हैं ये तो करने से भी पता चल जाता है ना बाद में Of कि ये कर course, इन्होंने of course, किया है। of course, of course. So आपको पता है इंडिया ने 1974 में ही पहला किया था ना, पाकिस्तान ने तो किया नहीं था। पाकिस्तान ने तो रिटालिएट किया जब 1914 में जब भारत ने किया तो उसको किया, सॉरी 1914 बोल रहा हूँ मैं, 1998 में, 1998 में। अब लिखिए, it has or India has following nuclear policy. It has following, it has, one minute, it has following policy. पहला लिखिए, NFU, no first use. दूसरा, peaceful use of nuclear energy, peaceful use of nuclear technology. Technology for energy purpose, for energy security. Right? Yes sir. ये दो मेजर है, नो फर्स्ट यूज एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। राइट राइट, लिखिए, बट नाउ और बट लिखिए, बट there is a debate among the National Security Advisor, National Security Advisor and a scholar that India should abandon NFU, no first use policy, and allow India should abandon NFU and allow preemptive strike. But the National Security Advisor and a scholar that India should abandon NFU, National No First Use Policy, and allow preemptive strike. Allow Preemptive strike. okay. PREEM PTIVE. PREEM preemptive strike. But there is a debate among National Security Advisor and scholar that India should abandon NFU, no first use policy, and allow preemptive strike. Then Yes. India has also aspiration Yes sir. to join
Yes, sir. MRV club. Which club? MRV. MRV club. ये क्या है? ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मल्टीपल क्या होता है, हर एक जगह एक्चुअली क्या होता है, बस होता है, क्या होता है जो कैरी करता है न्यूक्लियर वेपन, और हर एक जगह पे ये आप ले जा सकते हैं, इंडिया के हर जगह पे ले जा सकते हैं और वहां से टारगेट कर सकते हैं। अभी तक ये एमआरबी किसके किसके पास है? यूएस के पास, चाइना के पास, रशिया के पास, चीन के पास है। तो हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी ये डेवलप करना चाहिए एमआरबी। एमआरवी क्लब बोलते हैं इसको। हाँ, एमआरबी 3 लोगों के पास है ना। एमआरबी एक्चुअली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी डेवलप कर चुका है पाकिस्तान। नहीं, क्लब क्लब जैसे न्यूक्लियर क्लब, न्यूक्लियर क्लब मतलब क्या होता है कि जिसके पास न्यूक्लियर कंट्री, व्हाट इज न्यूक्लियर क्लब? अच्छा, जिसके पास है न्यूक्लियर क्लब मतलब यस, जिसके पास न्यूक्लियर बम है। हम भी न्यूक्लियर बम चाहते हैं, हम उसी लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। वैसे एमआरबी क्लब यानी कि एमआरबी एक टेक्नोलॉजी है जो हम डेवलप करना चाहते हैं और हम भी उसी कतार में खड़े होना चाहते हैं। व्हाट द आइडिया? यस। ओके, अब यू नो पाकिस्तान का क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है प्रिमिटिव स्ट्राइक। क्या है? प्रिमिटिव स्ट्राइक। हाँ, वो कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। उनका नो यूज, मैंने बोला ना कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ दीपावली नहीं होता कि हम पटाखे छोड़ेंगे, पटाखे की तरह हम न्यूक्लियर बम छोड़ेंगे। हम कभी भी छोड़ सकते हैं, हम कभी भी दिवाली मना सकते हैं। राइट? हाँ, ओके। यस सर। नाउ कम्स यू सी द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। किस कंट्री का है नो? देखिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इंडिया का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का और यूएसएसआर का। बट चाइना का नो, ये जो नो, चाइना का कल हमने शायद लिखा कि उसका फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना। नो, इंडिया का भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और चाइना का भी नो यूज पॉलिसी। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वार हो सकता है। Why? Because both have no first use policy. So the military can come, you know, and can engage. Conflict हो सकता है, right? Right. So India का no first use policy नहीं है। अगर इंडिया ने no first use policy खत्म कर दे तो एक deterrence, you know, चाइना के खिलाफ हम और पाकिस्तान के खिलाफ भी हम डेवलप कर सकते हैं, right? यस सर। हाँ, अब देखिए, चाइना would strike first against USA in case USA would enter the Taiwan conflict. So USA के खिलाफ चाइना का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, देख लीजिए क्लियरली। चाइना यूएस को टारगेट बना के रखा हुआ है कि अगर ये ताइवान के चक्कर में आया है, किसी चक्कर में आया, राइट? अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी देखिए किसका किसका है। नहीं, एक सेकंड सर, ये जो यूडीएसएसआर का मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर, यूडीएसएसआर, पता नहीं ऐसे लिखा हुआ है। अदरवाइज इसको आप नेग्लेक्ट करके छोड़े चले, मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैंने गूगल से इसको देखा तो गूगल में लगा मुझे इंफॉर्मेशन, मैंने कहा ठीक है इसको ले लो। ओके।
मुझे भी क्लियर नहीं, अगर मैं ढूंढूंगा। अब देखिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी किसका किसका है। यूएसएसआर का हम छोड़ देते हैं, शायद ये कोल्ड वार के टाइम का यूएसएस ये पॉलिसी था उनका। कोल्ड वार का जो टाइम था जिसमें यूएसएसआर की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आ गया है यूएस का, रशिया का, यूके का, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ डिनायल, प्रिंसिपल ऑफ डिनायल, प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। ये जो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो होती है ये सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के कॉन्टेक्स्ट में होती है, इसके अलावा जैसे और कोई इक्विपमेंट है ऐसा कोई जो हम यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए, तो उसके नहीं, लिए अदरवाइज न्यूक्लियर बम में क्या है, न्यूक्लियर बम इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, आई एम टेलिंग यू। अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया विदिन 8 सेकेंड, विदिन 8 सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अटैक करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा विदिन 8 सेकेंड। इट इज सो डेंजरस एंड डिजास्टरस। पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान खत्म हो जाएगा, आपको हो सकता है उसका इम्पैक्ट ईरान पे जाए, रशिया में जाए। इट वुड बी अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन। और ये तो पूरी कंट्री को एक बार खत्म कर सकता है, इतना ना मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यू नो इट्स अनइमेजिनेबल। सो कहा जा रहा है ना कि अगर न्यूक्लियर बम हो तो लड़ाई ना होगी, क्योंकि आदमी को पता है कि भैया जिंदा रहेंगे तब ये पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या वगैरह वगैरह करेंगे। न्यूक्लियर बम है तो उनको पता है कि जिंदा नहीं रहेंगे अगर मारा तो, और है तो कैसे मान ले कि नहीं मारेगा, है ना। माथा तो माथा यस, वो कभी सनक गया माथा तो डालेगा, वो बोलेगा कि चलो हम तो जा ही रहे हैं जन्नत में, तुमको भी ले चलते हैं। हाँ नहीं, तो ये है। चलिए, अब नेशनल इंटरेस्ट बचा है, मुझे लगा नेशनल इंटरेस्ट खत्म कर दिया मैंने। ओहो, नेशनल इंटरेस्ट के बाद है थ्योरी। ठीक है, आइए नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, यस सर। देखिए, इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन IR, या it is a fundamental goal that a nation state seeks to promote. The foreign policy of each state is formed on the basis of national interest. The foreign policy of each state is formed on the basis of national interest. And a state always try to justify try to justify its action yes on the basis of its national interest. In fact,
full stop के बाद in fact, comma, the behavior, in fact, comma, the behavior of national interest is always determined by national interest. The behavior of this interest. The behavior of state. The behavior of state is always determined by its national interest. Yeah. लिख दिया full stop. Yes. Okay. The concept of national interest is vague and ambiguous. The concept of national interest is vague and ambiguous. Vague and ambiguous. Yeah. Full stop. However, comma. Yes, sir. A national interest could be national interest could be Yes, interest could be लिखिए A उसमें could be ऐसे लिखिए could be A लिखिए survival could be survival. B security. C economic development. Survival, security, economic development. D yes, D technological advancement. Advancement. E Yes. expansion of territory. Expansion of territory. F to dominate the world. To dominate the world. And list goes on. Yes, sir. Okay, Morgenthau in his book, Morgenthau in his book, Politics Among Nations, Politics Among Nations, argued that Yes, sir. it is not a political necessity. It is not only political necessity. It is not a political necessity. It is not a only political necessity.
It is not a only political necessity, but also a moral duty of each state. But also a moral duty of each state Yes. to follow its national interest. To follow its national interest. Yeah. Yeah. Yes. जरा चेंज करके लिखिए. देखिए, in international politics, comma, Yes, sir. comma, there is a difficulty to define. There is a difficulty to define the concept of national interest. Okay? Its meaning changes as per time and circumstances. Its meaning changes as per time and circumstances. For example, International politics, there is difficulty to define the concept of national interest. और आगे क्या लिखा? Its meaning changes as per time and circumstances. Example. Yeah. For example, Hitler. Example. For example, comma, Hitler. Yes. Justified Yes, sir. Genocide of Jew in the name of national interest. Yes, sir. Full stop. The US has developed Yes, sir. The US has developed destructive weapon in order to fulfill American national interest. Yeah, yes, sir. It has built nuclear base. At Diego Garcia Island. Which island? Diego Garcia. ये देखिए, ये रहा डिएगो गार्सिया द्वीप. बस इंडिया से थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं. श्रीलंका देख रहे हैं यहाँ पर. ये पूरा कंट्रोल करता है एशिया. डिएगो गार्सिया, it has built nuclear base at Diego Garcia Island to target the erstwhile USSR
to target the erstwhile USSR as well as to promote American interest in the Indian Ocean. As well as to promote American interest in the Indian Ocean. Yes, sir. During 1979 Yes, sir. to 89, Yes. the USSR justified its intervention in Afghanistan. The USSR justified its intervention in Afghanistan in the name of Soviet national interest. Yes, sir. Okay. In 1949, full stop देके लिखिएगा. In 1949, China had occupied Tibet. In 1949, China had occupied Tibet. Yes, sir. To serve her national interest. To serve her national interest. Yes, sir. Right? लिख लिया? Yes, sir. इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए. And today, and she continuously claiming on India's territory for the sake of same. For the sake of same मतलब SAME, हाँ, national interest. So therefore, it is very difficult to define national interest. कुछ भी करता है लोग national interest बताते हैं. Right? Yes, sir. एक second. और ये अगर कुछ भी एग्जांपल लिख सकते ये एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि अमेरिका अटैक्ड अफगानिस्तान एंड यूजेस इराक on the name of national interest. Today America is withdrawing from Afghanistan, right? Are you aware of the fact? America is withdrawing its troops from Afghanistan. America? नहीं, America, USA. Yes, yes, America. The US attacked, on Afghanistan. कब अटैक किया था? ये तो retaliation भी किया ना जब 9/11. Exactly. On what? On the name of national interest. Right? The war on terrorism. Right? इसका नाम था enduring freedom. क्या नाम था? Enduring freedom. इन्होंने किया ना पहले. इन्होंने तो retaliation किया था. Yes. So on the name of what? National interest. National interest was a prime, reason. Yes, reason. Right. देखिए, there are two approach of national interest. There are two approach of national interest.
there are two approaches of national interest. Yes, sir. A, objective. A लिखिए objective colon nation state define national interest with some objectively defined criteria. एक सेकंड से क्या नेशन स्टेट Nation state defines national interest with some Yes, sir. with some objectively defined criteria. Yes, sir. दूसरा लिखे B, subjective. Yes, sir. Nation state define national interest as per time and circumstances. So it is pluralistic in nature. With subject मैंने लिखाया nation state define national interest as per time and circumstances. So it is pluralistic in nature. सॉरी सर एक बार फिर से बोल दीजिए आवाज थोड़ी सी हो गई as per time and circumstances. Yes, sir. So it is pluralistic in nature. Yeah. There is a much confusion in the meaning of national interest. There is a much confusion in the meaning of national interest. That is why Raymond Aron Yes, sir. called for abandon the concept of national interest. Abandon the concept of national interest. Yes, sir. He said it is a meaningless and a pseudo theory. It is a meaningless and pseudo theory. Right? Pseudo मतलब वही से फालतू हाँ फालतू का बेकार का थियरी है, इसीलिए बोला कि छोड़ दो उस थियरी को, नेशनल इंटरेस्ट को। सब बकवास करते हैं, सब कुछ भी करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना? Yes. अमेरिका अपना अमेरिका टेररिज्म को प्रोलिफरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट बता रहे हैं, सोचिए, है ना? हाँ। तो लिखिए Morgenthau, however Morgenthau पमा देख के लिखेगा, however Morgenthau, Yes, sir. Morgenthau said that Yes, sir. said that to seek power Yes, sir. should be a national interest for all countries.
To seek power should be a national interest for each country. हाँ, हर कंट्री का एक वो नेशनल इंटरेस्ट होता है टू सीक पावर, पावर को एक्वायर करना, पावर मेंटेन करना, पावर प्रिजर्व करना, राइट? Yes, sir. देखिए, इन हिज वर्क डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स, in his work Dilemmas of Politics, Yes, sir. Morgenthau said that Yes, sir. the concept of national interest, Yes, sir. the concept of national interest has many residual meaning, Yeah. and one residual meaning is full stop. One residual meaning is survival in the international society. In the international society. Yes, sir. That is protection of physical, economic, cultural identity. That is protection of physical, economic, cultural identities against encroachment by other nation state. Protection of physical, economic, cultural identities against encroachments by other nation state. Yeah. Done? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन लिख लीजिए नेशनल इंटरेस्ट का. अच्छा, इसका मैंने लिखा है क्या, डेटरेंस का Question. हाँ, लिखवा दूं क्या या बाद में? कर लेते हैं पहले पूरा से, फिर लिख लेंगे. ठीक है, ठीक है, एंड में लिख लूंगी. ओके ओके, बस थोड़ा ही रह गया. लिखिए, टीबी रॉबिन्सन क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. T.W. Robinson classification of national interest. देखिए, 6 types. Yeah. 6 types. पहला लिखिए प्राइमरी इंटरेस्ट, Yeah. secondary interest, third permanent interest, fourth variable interest, fifth general interest, sixth specific interest. ये 6 तरीके हैं नेशनल इंटरेस्ट, मतलब 6 तरीके के नेशनल इंटरेस्ट हैं. इवन ये भी कोई अच्छा सा क्लासिफिकेशन नहीं है, बट एनीवे. अब लिखिए मींस टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट. क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, इतना डायनेमिक है, कोई कुछ भी. एग्जैक्टली, बट उन्होंने किया है तो मैंने लिखा दिया. अगर नेशनल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ गया ना तो हाँ, तो मान लीजिए कि आप तो बिल्कुल आप लिखना नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करना, फिर बताना कि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस है, राइट? और एग्जांपल दे देना हिटलर का, अमेरिका का, यूएसएसआर का, राइट?
Yes. कि हाँ कि लोग कुछ भी करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। और इसीलिए रेमंड एरोन ने कहा कि ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस कॉन्सेप्ट को अबेंडन ही कर दो, राइट। ये एक मीनिंगलेस और सीडो थ्योरी है, हाँ। बट मॉर्गेनथाउ इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं, देखिए नेशन स्टेट का इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, टू सीक पावर, हाँ, पावर सीक करना हर नेशन स्टेट का एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है। हाँ हाँ हाँ। और इसके साथ ना नेशनल इंटरेस्ट के साथ बहुत सारा रेसिडुअल मीनिंग है, और जो रेसिडुअल मीनिंग है बहुत सारा है। वो एक ये भी है कि सर्वाइवल, इस एनार्किक वर्ल्ड में हमें सर्वाइव करना है। सर्वाइव का मतलब कि हमें जो कोई अटैक है, या चाहे फिजिकल अटैक हो, चाहे इकोनॉमिक अटैक हो, चाहे कल्चरल अटैक हो, ये हमें अटैक से अपने आप को बचाना है, राइट राइट। अब लिखिए मीन्स टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। देयर आर सेवरल मीन्स। To promote national interest. A लिखिए डिप्लोमेसी, यहाँ पे लिखिए बी प्रोपेगेंडा, थर्ड इकोनॉमिक एड एंड लोन्स, तीसरा अलायंस एंड ट्रीटी, फोर्थ फिफ्थ वार और लिमिटेड वार। Yes, sir. So नेशनल इंटरेस्ट खत्म, इतना ही बहुत है। अब देखिए ये मैं डियागो गार्सिया का बता रहा था। देखिए डियागो गार्सिया इंडियन ओशियन में है, ये यहाँ पर। और देखिए ये कहाँ से टारगेट करता है, किसको किसको, ये ईरान को टारगेट करता है, ये इंडिया को टारगेट करता है, ठीक है, और ये साउथ ईस्ट एशिया को टारगेट करता है, ये यहाँ से चाइना को टारगेट करता है। सो डियागो गार्सिया एक्चुअली यहाँ से अमेरिका बहुत दूर है ना, और यहाँ पर आइलैंड पे न्यूक्लियर ये जो टेक्नोलॉजी स्टैब्लिशमेंट करके यहाँ पर एक जो अमेरिकन हेजेमनी है, पता डियागो गार्सिया द्वीप में 1948 से पहले यूके का था। किसका था? यूके का था। और यूके जब जाने लगा इंडिया से और यहाँ से भी हटा लिया, तो यूएस को सौंप दिया। उसके बाद यूएस ने, पता है कि यूके के बाद यूएस की हेजेमनी हो गई। एक पैक्स ब्रिटानिका हुआ करता था, यहाँ पे पैक्स अमेरिकाना डेवलप हो गया उसके जगह पे, राइट। एक फोटो मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे ये डियागो गार्सिया है, राइट। यहाँ पर देखिए अमेरिकन फ्लैग भी है और यूके फ्लैग भी है। इंटरेस्टिंग, राइट। यूएस नेवी सपोर्ट के फैसिलिटी डियागो गार्सिया one island, one team, one mission. And what is the mission? To maintain hegemony, no? Yeah. To preserve hegemony. To seek power, जैसे Morgan power. Yeah, yes. अभी Morgan की बात करेंगे. Yes, to seek power. Now we are moving to the theory of IAS. तो ये जो सर ये वाला टॉपिक है, एक सेकंड सर, ये वाला सेकंड टॉपिक खत्म होगा मतलब। टॉपिक नंबर 7 है या 6 है?
6 है key concepts in international relations, national interest, national security, national power, balance of power, deterrence, collective security, world capitalist economy and globalization. वो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब हम WTO पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, उस वक्त पढ़ेंगे. यस, ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा अगर इम्पैक्ट होगा उसी वक्त पढ़ेंगे. ट्रांसनेशनल एक्टर हम पढ़ेंगे, UN, एशियान, EU, उस वक्त पढ़ेंगे. तो मतलब इसमें से ट्रांसनेशनल एक्टर्स और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये रह गया. हाँ, वो उसी वक्त कवर हो जाएगा. ओके, और ग्लोबलाइजेशन तो हमने कर ही लिया. कुछ रह गया कहीं भी ग्लोबलाइजेशन का तो उस वक्त मैं बता दूंगा, क्योंकि हर टॉपिक में कुछ न कुछ आता है. राइट, डन सर. सो वी आर मूविंग टू थियरी, एक्सप्लेनिंग डिबेट ऑन थ्योरी ऑफ IAS. अब आपको 15-20 मिनट सुनना है, आज लिखना नहीं है कुछ. इसके बाद आपको राइट एक कहानी सुनना है जो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली थियरी का मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट. हाँ, यस सर. अब मान लीजिए कि घर में झगड़ा होता है, किसी घर में महिला एंड पुरुष के बीच में, तो हमारे पास थियरी है फेमिनिज्म. राइट, एंड थ्रू फेमिनिज्म हम कुछ चीज देखते हैं. क्या देखते हैं कि जो पावर है वो अनइक्वल डिवीजन है मेल और फीमेल के बीच में, इसलिए झगड़ा होता है. यस. सो जस्ट लाइक दैट कि जो डिबेट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो 1920 के बाद, 1919 के बाद इनफैक्ट शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर के 1 के बाद. राइट, एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक्चुअली बहुत ही शॉक था. वर्ल्ड वॉर 1 वाज एक्चुअली शॉकिंग इवेंट. It was unprecedented in world history, right? Yes. और it was a total war, right? और उनको ये फोकस किया कि क्यों ये हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, right? They focused on why, the question of why World War 1 occurred and how, right? And if at all the global community failed to avoid war, and in future अगर ऐसे war होता है तो क्या international community or nation state would be able to prevent the war in the future. ये बड़ा ही war को लेकर के बड़ा ही डिबेट था. राइट, यस सर. सो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव थे. एक पर्सपेक्टिव तो ये था कि वार इसलिए होता है कि तुम लोगों ने BOP कर लिया. क्या कर लिया? BOP कर लिया, सीक्रेट डिप्लोमेसी कर लिया. हाँ, और ये करके तुम लोगों ने झगड़ा कर लिया, है ना, कि आप लोगों ने गुटबंदी करी और झगड़ा कर दिया आपने. और ये कहना था किनका? लिबरल्स का. किनका? लिबरल्स. ये क्लासिकल लिबरल्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. वो क्लासिकल लिबरल्स थ्योरी वाले मत लीजिएगा, इसको हम आइडियलिज्म भी बोलते हैं. क्लासिकल लिबरल्स ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, WW1 के बाद. और ये पहला डिबेट था क्लासिकल लिबरल्स का, और कहना था कि देखिए ये जो BOP है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और ये जो सीक्रेट डिप्लोमेसी है ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. राइट, वार को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वार को कैसे नहीं होने दे सकते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी. क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी. हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया मिलके ये अगर जिम्मेदारी ले कि अगर एक के पास अटैक होता है तो सारी दुनिया जो एग्रेसर है उसको रोकेगी, तो एग्रेसर को बोलेगी आप पीछे हटो. राइट, मतलब कि हर कंट्री को पूरी दुनिया में होने वाली अगर एग्रेशन अटैक को रोकने के लिए तैयार होना चाहिए.
अगर कलेक्टिवली हम ऐसा करेंगे तो हम फ्यूचर में वार को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या। दूसरा कहा कि ठीक है आप लोग सेक्रेट डिप्लोमेसी कर लेते हैं, सेक्रेट डिप्लोमेसी मत कीजिए। ऐसा हम करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आके बात कीजिए आप लोग, है ना? जैसे लीग ऑफ नेशन आया, लीग ऑफ नेशन आया, तो यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ पर जो भी डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, हाँ मीडिएशन लीजिए आप यूएन के लोगों का। सॉरी उस वक्त लीग ऑफ नेशन था 1920 के बाद, और आप ना ये झगड़ा सुलझा लीजिए तो वार होगा ही नहीं, राइट? सो ये सारा कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? विड्रो विल्सन। कौन थे? विड्रो विल्सन। यस, विड्रो विल्सन। या विड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया, राइट? और कहा 14 पॉइंट प्रोग्राम में एक ये पॉइंट भी था कि लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हो, वहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा, और उसके बाद हम वार को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट वार इन नियर फ्यूचर, राइट? सो द फर्स्ट डिबेट ऑफ IR was the first debate of IR was liberal, क्लासिकल। right? Liberal we call classical liberal, फिर इसको बोलते हैं आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट, राइट? सो ये पहला डिबेट था, राइट? लेकिन क्या हुआ? वर्ल्ड वार 2 भी हो गया। ये बात कर रहे थे वार नहीं होने देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट वार हो गया। अब क्या हुआ कि जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने से वार रुकेगा नहीं, राइट? हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ऐसे जो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। और रियलिस्ट ने, राइट, उनको रियलिस्ट बोलिए, उनको क्लासिकल रियलिस्ट बोलिए, उनको पॉलिटिकल रियलिस्ट बोलिए, उन्होंने कहा कि देखिए जो नेशन स्टेट है वो पावर चाहता है। क्या चाहता है? पावर चाहता है। हाँ, आप यूटोपियन आइडिया लेकर के आ रहे हैं कि चलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी कर लेंगे, या लीग ऑफ नेशन बिठा लेंगे तो, या यूएन बिठा लेंगे तो आपको वार नहीं होगा। नहीं, वार इसलिए होता है कि नेशन स्टेट पावर चाहता है, राइट? ये प्रैक्टिकलिटी है। क्यों पावर चाहता है? क्योंकि भाई जो लीडर है, कौन है लीडर? वो भी समाज से ही आता है ना, और समाज में एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? मान लीजिए पुलिस वाला ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी को मार देगा पकड़ के। मैं बता दूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर का टेंशन ना हो या ट्रेडिशन का टेंशन ना हो, देखिए टेंशन होता है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन ये भी टेंशन होता है धर्म का। धर्म भी रेगुलेट करती है बिहेवियर को, isn't it? Yes, sir. Right? Religion also regulates behavior of the individual, कि मुझे किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, मुझे किसी को मारना नहीं है, किसी को नहीं है। अगर ये दो चीज आप छोड़ दें, राइट, एक रिलीजियस नॉर्म और लॉ एंड ऑर्डर, तो एक इंसान दूसरे इंसान को उसी तरह मार देगा जिस तरह जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को देखना नहीं चाहता है। एक ही राजा होगा, राइट? हाँ, राइट। उससे राजा से भी कोई तगड़ा आ गया तो भी उसको मार के वो राजा बन जाएगा,
यस। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे हम लोग रह रहे हैं, मान लीजिए आप मेरे पड़ोसी हैं, और वो आप रहने आई हैं बगल में, और हम रह रहे हैं दिल्ली में नहीं, हम रह रहे कहीं, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह जहां पर स्टेट नहीं है। क्या नहीं है? स्टेट नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, राइट। और मैं आया और मैंने घर बना लिया अपना यहाँ पर। आप आए और आपने भी घर बना लिया यहाँ पर, राइट। यस सर। और आपको क्या था, डॉग अच्छा लगता है, और आपने क्या किया, एक जर्मन शेफर्ड डॉग पाल लिया, राइट। आपको डॉग अच्छा लगता है, आपने पाल लिया। यस सर। बट ये डॉग कभी कभी भौंकता भी है, मुझे डर लगता है ये भौंकता क्यों है। कभी कभी मुझे लगता है ये डॉग मुझे काट ना ले, यस सर। राइट। और ये काट भी लेगा तो मैं किसको बुलाऊंगा, पुलिस तो है नहीं, स्टेट तो है नहीं, स्टेट तो नहीं है ना, ये एनआरकी का सिचुएशन है, राइट। और मेरे अंदर जो डेवलप हो रहा है बोलते हैं डायलेमा। क्या बोलते हैं? क्या डेवलप हो रहा है सर? मेरे अंदर जो डेवलप हो रहा है ना, ये कुत्ता मुझे काट ना ले, ये लेडी कुत्ता क्यों रखी हुई है सिर्फ, हाँ। बट आपने तो अपने लिए रखा है, आपको अच्छा लगता है डॉग, आपने रखा है। आपने इसलिए तो नहीं रखा कि मैं भैया इसको कटवा दूंगी, सर को कटवा दूंगी, नहीं ना। बट मेरे अंदर ये सिक्योरिटी डायलेमा है कि ये मुझे कहीं काट ना ले। मैं आपका पड़ोसी हूँ, साथ में रहता हूँ, और मुझे डायलेमा है कि कहीं ये कुत्ता भौंकता किसी के पीछे से, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, राइट। मैं अपने घर के चारों तरफ एक दीवार बना देता हूँ, राइट। आपका ये ऑब्जर्वेशन है या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है। या कहने का मतलब है कि जब सिस्टम एनार्किकल हो और आपको पता हो कि पुलिस और पुलिस मिलिट्री कुछ नहीं है, यहाँ पे मुझे बचाने वाला नहीं है, then you all have a security dilemma, right? Yes, and every nation state has this security dilemma. अगर कोई इंटरनेशनल हाँ, वो एक थिंकर थे ना, कौन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वो बता रहे थे कि अगर ऐसी स्टेट होती है तो फिर सब एक दूसरे से डरेंगे, मतलब एनिमी फील करेंगे कि ये हमारा एनिमी है। हॉब्स का ये हॉब्स का कि अगर मान लीजिए अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो सबको डर लगता है, राइट। सबको एक थ्रेट होता है, बट सब पावर चाहता है, सब पावर चाहता है। बात करेंगे तो ये डिबेट होता है रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में, और इस डिबेट में कौन जीतता है आपको पता है? इनिशियली रियलिज्म, राइट। रियलिज्म जब जीत जाता है तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और उनको बता देता है, और लिबरल्स को, क्लासिकल लिबरल्स जिसको आइडियलिस्ट बोलते हैं, कि देखिए आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वर्ल्ड इस तरह का है और इसलिए ये होता है। उसके बाद जो एक्चुअली कोई भी जो आइडिया है वो स्टैटिक नहीं रहता, वो बदलता रहता है ना। yes, तो 1970s के आसपास एक जो लिबरल्स हैं उनका रिवाइवल होता है, जिसको हम लिबरलिज्म भी बोलते हैं, राइट। और देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट। हम बताएंगे आपको जब लिबरलिज्म। अभी मैं थोड़ा सा आइडियलिज्म आपको बता देता हूँ। जो पहली थियरी है वो थियरी का नाम है
आइडियलिस्ट थियरी, राइट? यस सर। क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ आईआर, ये रियलिस्ट अप्रोच, न्यू रियलिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग, राइट? ये सब थियरी पढ़ेंगे। थियरी चलेगी 3-4 दिन, 3 दिन तो चलेगी कम से कम। अब चलिए आइडियलिज्म क्या है। अब आइडियलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय वुडरो विल्सन, बता दिया। यस सर। इट इज कॉल्ड क्लासिकल लिबरलिज्म और इंटरवार्ड लिबरलिज्म। इंटरवार्ड लिबरलिज्म मतलब 1919 से 1939 के बीच में ये डेवलप हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आइडियलिज्म का, राइट? यस सर। It was the first debate in international relation theory. ये पहला डिबेट था इंटरनेशनल थियरी का। आपको बताया मैंने कि वुडरो विल्सन was a severe critic of BOP, yeah, right? And he was severe critic of sacred diplomacy in international relation. And उन्होंने कहा कि ये BOP के कारण और sacred diplomacy के कारण ही वार होता है, right? yes sir. So the BOP and sacred diplomacy failed to establish peace, security and stability in international system. ये जो BOP है और sacred diplomacy है, it failed to establish peace in the international system, right? So Wilson proposed 14-point program. इतना तो आपको पहले ही पता है कि 14-point program दिया था, and which led to creation of League of Nations. जिसके कारण लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, राइट? विल्सन का कहना था कि जो CS है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट, इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट? दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री आपस में नहीं लड़ते हैं। आपने देखा कभी यूएस और कनाडा को लड़ते हुए? नहीं सर। यूएस और यूके को लड़ते हुए नहीं, राइट? नहीं सर। तो ये था, इनका कहना था कि I'm telling you, this was the Woodrow Wilson, right? This was Woodrow Wilson, and he was proposing liberal political order, right? Yes sir. And he said, you know, democratic countries never go for war against each other. और कहा कि ये जो इंपेरियलिज्म है ये सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण वार का कौन था? इंपेरियलिज्म। क्योंकि देखिए यूके भी इंपेरियल कंट्री था, उन्होंने छाप रखा था, और जो जर्मनी था वो छाप रहा था। जर्मनी ने बीओपी किया, इसने भी बीओपी किया, राइट, और वार हुआ, राइट? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए इंटरनेशनल पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, हमें नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। व्हाट इज नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन? सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब अगर इंडिया चाहता है फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम दे दो। अगर श्रीलंका फ्रीडम चाहता है तो फ्रीडम दो। अगर मान लीजिए म्यांमार फ्रीडम चाहता है तो फ्रीडम दो। किसी भी कंट्री को कॉलोनी बना के मत रखो, राइट? अगर कॉलोनी बना के रखोगे तो दूसरा भी चाहेगा कि हम भी कॉलोनी बनाए, दूसरा नेशन स्टेट। तो इंपेरियलिज्म नेचर नहीं होना चाहिए, सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबके जगह पे डेमोक्रेसी होना चाहिए। और अगर ये डेमोक्रेसी होगा हर जगह तो डेमोक्रेटिक स्टेट आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, राइट? यस सर। वरना दूसरा भी एनकरेज होगा कि इसने कॉलोनी बना रखी तो हम भी बना ले, राइट? और बेसिकली ये जो आइडिया था आइडियलिज्म का, ये दो जो अर्लियर थिंकर थे, एक था मॉन्टेस्क्यू और दूसरा था कांट, उससे प्रभावित था। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि
जो ह्यूमन नेचर है, जो डिसीजन कौन बनाता है, डिसीजन मेकर कौन होता है, ह्यूमन बीइंग। And human nature is not so bad. The human nature play a very important role in decision making, and human is not so defective and prone to self-interested in so much that it produce conflict. इंसान कोई conflict नहीं चाहता है, right? So conflict and war is, you know, जो war है, conflict है, ये क्या है, societal attributes है और कंपटीशन है among नेशन। ये जो कंपटीशन यूके और जर्मनी के बीच में हुआ, इसका कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं कि वहां के लोग वर्ल्ड वॉर चाहते थे, या जर्मनी के लोग वर्ल्ड वॉर चाहते थे, या यूके के लोग वर्ल्ड वॉर चाहते थे, या इंडिया के लोग वर्ल्ड वॉर चाहते थे। पब्लिक ओपिनियन में अगर आप लोगों को पूछेंगे तो मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि हमें वार नहीं चाहिए, वार नहीं चाहिए, राइट? सो conflict and war is not integral part of humanity, right? It is not part of human nature, right? Yes, the sir. war is consequences of societal attributes, right? The social structure, the institutional structure, like imperialism, like BOP, like secret diplomacy. अब ये सब जो करते हैं बंदी, उसके कारण वार होता है। पता चला? Yes. वार जो है ह्यूमन नेचर के अंदर नहीं है, राइट? वार जो होता है उसका कारण, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, उसका कारण सोसाइटल एट्रीब्यूट है। दूसरा है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा कि देखिए एक स्ट्रैटेजी है, राइट? एक स्ट्रैटेजी है हमारे पास, जो जिसके कारण हम जो एनार्किकल सोसाइटी है जिससे हम निजात पा सकते हैं, वो क्या है? हमें इंटरनेशनल सोसाइटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इंटरनेशनल सोसाइटी। यस। सो इंटरनेशनल सोसाइटी ऐसा नहीं कि वुडरो विल्सन का दिमाग था, नहीं, इमैनुअल कांट ने कहा था कि टू ओवरकम द एनार्किकल नेचर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी वी नीड टू मेक अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कैसे हम इस एनार्किकल सोसाइटी से हम बाहर होंगे? कांट बड़ा इजीली में कहता है कि वी मस्ट एंगेज फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा हर कंट्री का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर दें तो कोई भी जो कंट्री है वो वार नहीं चाहेगा, राइट? सो ऐसा करते हैं कि हम हर स्टेट का एक फेडरेशन बना लेते हैं, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो मीडिएट करेगी। अगर वार होना भी रहेगा तो ये मीडिएट कर लेगी और वार को प्रिवेंट करेगी। मान लीजिए उसके बाद भी वार हो जाता है तो हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी है। yes. वहां पर हम देखेंगे कि गुंडा कौन है। अब जो गुंडा है उसको पकड़ के पीटेंगे, हाँ, yes. तो गुंडा अपने घर में, और लोग ऐसे वार नहीं होगी। और लोगों को पता होगा कि फलाना बॉस है, मतलब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रांग है तो और कलेक्टिव वार नहीं कर। ओके, यस सर। यस सर, एक मैं बताऊं, this idealism was a theory that आपने कुछ आपने कुछ बोला? मैं चेक कर रही हूँ सर, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है ना। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ।
अच्छा, मैं अभी तो कोशिश नहीं कर रहा बोल हूँ रहे आपसे आप। सुनने का। मैंने बोला कि क्लियर है सब यहाँ तक? ये सर मैंने बोला भी कि मैं बताऊं एक बार। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। तो सर दो फिलोसफीज हैं, एक तो है मैंटेस्क्यू और एक है इमैनुअल की। तो मैंटेस्क्यू कहते हैं कि ये जो हम वॉर वगैरह करते रहते हैं, ये बेसिकली सोशल एट्रीब्यूट्स और कंपटीशन की वजह से है। अदरवाइज हम लोगों से पूछें अगर, तो उनको नहीं चाहिए, अगर उनसे पूछे तो उनको वॉर नहीं चाहिए। और उसके बाद इमैनुअल कांत बोलते हैं कि उनको वॉर नहीं चाहिए। और उसके बाद इमैनुअल कांत बोलते हैं कि हमें कलेक्टिव पीस वगैरह चाहिए, तो हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी होगी, ताकि लोग मतलब बाकी नेशंस में थोड़ा सा डर बैठे कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा अटैक करेंगे तो ऐसे कलेक्टिवली ये लोग फिर रिटेलिएट करेंगे। और उसके लिए हमें 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 जो है वो इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि चेक रखे। जैसे फिर इन्हीं से देखकर वुडरो विल्सन ने भी ऐसे ही बोला कि हाँ हमें कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। राइट 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 राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि जो बेसिक आइडिया था आइडियलिज्म का, ये था कि वार एंड कॉन्फ्लिक्ट आर आउटकम ऑफ इरेशनल डिसीजन मेकिंग, या right? And these type of activities are poor, result of poor leadership, but not of mass public opinion, right? And misunderstanding between leaders are the primary cause of war, not of human nature or anarchical nature of international system. It is a basic misunderstanding between the leaders. तभी तो BOP करते हैं। जैसे चाइना को हो गई थी, राइट, जब हमने तिब्बतन्स को असाइलम दे दिया तो उन्हें लगा कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी और IAS। राइट राइट राइट। तो वहां पे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है चाइना के पास इंडिया के रिगार्डिंग, राइट। अब ये कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स कैन हेल्प इन रेक्टिफाइंग दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। सो कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लो कौन है, UN या नेशन था, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ, एक लॉ हम लोग माने इंटरनेशनली, ये अगर मानते हैं सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं, राइट। लोग आपस में बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसको बैठ के डिबेट को सुलझा लें, झगड़ा सुलझा लें, लड़ने की क्या बात है, राइट। सो उनका कहना है कि हम जो पीस, अगर हम पीस कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल, थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट, थ्रू कोऑपरेशन, अगर सब लोग आपस में कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन, राइट, वी कैन एस्टैब्लिश पीस by the internet through which we can establish. The objective is to establish peace. And आवाज नहीं आ रही सर, मतलब डिस्टॉर्ट हो रही है नेट पर। अच्छा, मंडे से तो एक्चुअली खुल रहा है ना, यू नो, द फ्रॉम मंडे इट्स ओपनिंग। यस सर, अनलॉक हो रहा है, बट कह रहे हैं अभी फेजिंग में खोलेंगे तो फैक्ट्री वर्कर्स और इन सब के लिए कह रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर यस सर, we are also factory workers,
मतलब we are also worker ना, isn't it? You know, in the terms of marks, जो इंसान सैलरी पाता है ना, चाहे दिन के एंड में, चाहे महीने के एंड में, चाहे वीक के एंड में, सब वर्कर है, राइट? हाँ, एक्सेप्ट बिजनेसमैन, उसको थोड़ी सैलरी मिलता है दिन में, या वो तो पूरा मालिक है उसका, राइट? So what is difference between bourgeoisie and worker? Workers gets salary, which at the end of day, at the end of week, or at the end of month. Okay. So see criticism. क्या है? लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, आपको पता है लीग ऑफ फेल कर गया टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम। जो यूनाइटेड स्टेट था उन्होंने खुद ने ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशन, और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, राइट? एंड उसके बाद इन लोगों के कहने के बाद भी बीओपी वाज अ रियल पॉलिटिक्स, बीओपी हो रहा था। बैलेंस ऑफ पावर जो मैकेनिज्म, जो सेक्रेट डिप्लोमेसी थी, वो रियल पॉलिटिक्स थी, जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स था, वो हो रहा था। आइडम क्या कहता है? शुड, व्हाट शुड, ये कहता है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रियलिस्ट, राइट? यस सर। एंड EH कार्ड, इनका क्लासिकल वर्क है। EH कार्ड काम है, नाम है द 20 Years Crisis 19 to 1939, and he criticized Wilsonian notion of international card, that the European idea of empirical कहता है कि ये जो आइडियलिस्ट आज of international, it is a utopian idea, right? It कहता है होता है। So मैंने दे दिया मंडे को आइडियल, अभी कोशिश कीजिए हो जाए और फिर भेज दीजिए। यस, नो सर, एक्चुअली आवाज बहुत कम, मतलब डिस्टॉर्ट हो रही है। क्या कह रहे हैं सर? मैं कि मंडे को लिखवाऊंगा, मंडे। ओके, हाँ ओके, ठीक है, ठीक है सर। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर। हाँ, टुडे आई विल स्टॉप हियर। जो भी क्वेश्चन आप बना चुके हैं या बना रहे हैं, आप मुझे भेज दीजिएगा। Yes sir, yes, comparative politics and globalization I will send. Okay, okay, ठीक है, then see you then on Monday. Okay sir, bye sir. Bye.